हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी सीबीएस का जो 11 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैथ्स का जो सॉल्यूशन है, पेपर सॉल्यूशन, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सीबीएस का दिल्ली का जो कोड है, उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहले 1 से 10 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आते हैं 1 मार्क के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आया था वो देख लीजिए। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें से के फाइंड करना है। तो उसका के का आंसर आएगा 2। बाद में एच सी एफ एंड एल सी एम निकालना है 12, 21 और 15 का। तो उसका आएगा 3 HCF आएगा और 420 LCM आएगा। बाद में वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x और x+10 एंड 3x+2 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP इज, उसका आंसर आएगा 6। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10th टर्म क्या होगी, P+9Q होगी। बराबर, ये वाला ऑप्शन। बाद में 5वां क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k is 2, then the value of k is -10. Sixth question, the total number of factors of a prime number is 2. Seventh question, the quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and their product is 6 is x² + 5x + 6. 8 वाला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ p for which the points a 31, b 5 p and c 7 or -5 are collinear is what। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, p-1 कर सकते हैं /2 और 5-3 कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, -5 - 1 अपॉन 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, या -5 - 1 करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा p-1 अपॉन ये 2 कैंसिल हो के जाएगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो -2 आंसर आएगा। 9th वाला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा + b cos थीटा और 0 एंड 0 a sin थीटा - b cos थीटा। तो उसका आंसर आएगा √ में a² + b²। ऐसे पूरा स्क्वायर वाला हो जाएगा इक्वेशन और बाद में इसका 1 हो जाता है। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट p ऑफ k 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a ऑफ 2 - 2 and b -7 or 4 in the ratio 1:2, then the value of k is what। 1:2 is ratio here due to given, -2 2 is a point and -7 4 is b point, and the midpoint you have to find out. Ratio is 1:2, so here point is for k point you have to find out k और 0। तो k के स्थान पे कौन आएगा, 1:2 करोगे तो यहाँ से 2 से 0 आता है, -2 से 0 आता है और बाद में 4 आता है, तो ये ठीक है। तो 2 से -1 आएगा, बाद में -7 आएगा ना, -1 आएगा आंसर। 11th वाला क्वेश्चन है, उसमें गिवन ट्राइंगल ABC is same as triangle PQR. If AB upon PQ is 1/3, then arc of this 1/9. And then the figure ABC is given, length of BC you have to find out. So here you have to find out 4 3 is 7. This side is 4 3, total 7 semi, here 4 7. So this side is equal to 3 and this side is equal to 7. तो 3 7 क्या होगा,
10 सेमी होगा, तो BC 10 सेमी। बाद में वैल्यू ऑफ दिस यू टू फाइंड आउट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज गिवन टू 1/sec square theta. So 1/sec square theta is cos square theta. So sin square theta plus cos square theta is 1. And you have to find out the value of 1 plus tan square theta into 1 minus sin theta and 1 plus sin theta is also 1 minus sin square theta is cosec square theta, and that multiply this. So this term is also find out, answer is 1. बाद में ऐसा क्वेश्चन है, a ladder of 10 meter long reaches a window 8 meter above. ladder है 10 meter long है, window 8 meter above the ground, ऐसा रखा हुआ है ladder. Distance of the foot of the ladder from the base से कितना दूर है ladder, तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 आएगा, आंसर 6 मीटर। पाइथागोरस पे से आप ढूंढ सकते हो। बाद में कोस साइन वाला की कीमत है, वो आंसर है, आपको मिल जाएगा। वैल्यू पुट करना है 2 minus 1 minus 1, तो आंसर आ जाएगा 0। बाद में 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 60-20 आएगा, 16-20। तो मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ 15, then find n. The find out n plus 1 by 2n is equal to 15, then n plus 1 is 30 and minus 1, so n is equal to 29, answer. Die is thrown once, what is the probability of getting a number less than 3? Probability of less than 3 is 2 by 6 is equal to 1 by 3. And if the probability of winning a game is 0.07, what is the probability of losing? 1 minus 0.07 करना है, तो आपको मिल जाएगा 0.93, आंसर लूजिंग के लिए 0.93. The ratio of the length of the vertical rod and the length of its window is 1/√3. Find the angle of the elevation of the sun at the moment. तो 10 यहाँ से थीटा फाइंड करना, ये √3 है, ये 1 है, तो 1/√3 क्या होगा, 10 थीटा इज इक्वल टू, उसका एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू 13 डिग्री. So elevation of sun is at moment is 30 degree. Two cones have their heights in the ratio 1/3 and the radio in the ratio 3/1. What is the ratio of their volumes? So V by V2 is equal to R1 square upon R1 square H1 upon R2 square H2. So R1 is what? Radius ratio is 3/1. So 9R square into height of 1 upon radius square R square into here is height 3h. H cancel, R cancel. 9/3 is equal to 3/m is the ratio of the volumes. A pair of the dice is thrown once. What is the probability of getting a doublet? Is probability of the getting doublet is 1/6. Here you have to find out the figure D parallel to AC, DC parallel to AP. Prove that this. So BE parallel to EC, BE upon EC is equal to BC upon CP. BC upon CP ये वाला है, तो M/N ये वाला है, तो यहाँ से पूरा ले ले BE upon EC और BC upon CP. ऐसे आपको करके M/N यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो ये प्रूव कर सकते हैं ऐसे। और दूसरा दो टेंजेंट है TP और TQ, सर्कल है वो सर्कल सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ T, तो PTQ ये वाला इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 ऑफ OPQ ये वाला है, ये वाला x है, तो ये वाला कितना होगा 2x होगा।
The rod of AC of TV disc antenna is fixed at right angle of wall, and CD supporting disc, this AC is equal to 1.5 meter long and CD is equal to 3 meter. Then tan theta is equal to 30 degree is 1 by root 3, and sec theta and cosec theta, sec 30 degree. You have to find out this and put this value, this given 2 by root 3 plus 2 answer. If a number of x is chosen at random from the numbers, these numbers, what is the probability? This probability is x square लेस देन और इक्वल टू 4. उसमें क्या आएगा? -2 आएगा और +2 के बीच में आएगा. -2 और +2 के बीच में कौन सी प्रोबेबिलिटी? टोटल 7 नंबर्स है, तो बीच वाला आएगा 5. टोटल 5 ऐसे आएगा ना, -2, -1, 0, 1 और 2 ऐसे 5 आते हैं टोटल में से, तो 5/7 प्रोबेबिलिटी आएगी. क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीन फाइंड करना है. यहाँ से देखते जाए तो कितना मिलता है? 20, 60, 80, 70, 96, टोटल 326 और ईयर्स फ्रीक्वेंसी 40. 226/40 is 8.15. और यहाँ पे मोड फाइंड करना है 60 प्लस 12 माइनस 10 अपॉन 24 माइनस 60 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच इज 20. सो आंसर आएगा 65. Minute hand of the clock is 12 semi long. Find the area of the phase of the clock described by the minute hand in 35 minutes. His answer is 35 divided 6 into pi into 12 square. So answer is 264 semi square. The sum of the first 7 terms of an AP is 63 and its next 7 terms is 161. Find the AP. So you have to S7 find out 63, S14 224. So 7 by 2 A1 plus A7 is equal to 63, or 14 by 2 A1 plus A14 224. A1 plus A7 is 18, or A1 plus A40 is equal to 32. So this equation you have to find out D is equal to 2 and A1 is equal to 3. And then you have to put this 3, 5, 7, 9, 11. 11 is AP. That's answer. Then 3 marks each, 27 to 34. Determine graphically the coordinates of the vertices of a triangle. The equations of those sides are given these three equations. So this equation you have to find out the point of this -4, 2, 5, 2 and 3, 1. And this 4 is 0 is the cubic polynomial, and other zeros is x minus 4, and this is x square plus x minus 6. Then the other polynomial is x minus 4 and x plus 3 and x minus 2. The other two zeros is -3 and +2. Find the area of the triangle PQR formed by these 3 points -5, 7, -4, -5, 4 or 5. Then this is -5, 7. So 53 plus 53 divided by 2 is 53. And if the point C divides internally the line segment joining A and B, if the ratio is 3:4, then the coordinates of B is 2 and 5 and -5, -2. Then the point of 3:4 is the ratio. Then -1, -2 is the coordinate of B. Find the quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial of this. Then answer is cx square plus bx plus a. If polynomial given this,
f of x and polynomial g of x is this, then the divisional algorithm is what? So this is minus x cube plus 2x square minus 3x plus 5, and this is minus square plus x minus 1, then x minus 2 is the divisional algorithm. If a triangle, if square of one side is equal to the sum of square of the other side two sides, then the prove that the angle opposite to the first side of the right angle. So is A, is B and C square plus A square is equal to B square, then answer of 90 degrees angle B. A cone of the base is radius 4 divided into two parts of drawing a plane through the midpoints of its height and parallel to its base. Compare the volume of the two parts. This volume is V and this is 7V. This is midpoint, height of the parallel of base. Then answer is 1 by 7. Man can row a boat downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of the rowing in still water. Also find the speed of the stream. So 20 divided by u plus v is equal to 2. And 4 by u minus v is equal to 2. So 10 is equal to u plus v and 2 is equal to u minus v. So u is equal to 6 and v is equal to 4. So find the speed of rowing in still water is 6 km per hour and speed of the stream 4 km per hour. This given two circles touches at point C. Prove that the common tangent to the at C point bisects is the common tangent of P and Q. So PT is equal to TQ is the tangent of P and Q. This prove this into cot plus cosec theta minus 1 upon cot theta minus cosec theta plus 1. This 1 is put to this value, and then cot theta plus cosec theta plus cot theta is in bracket, and here is remaining 1 minus cosec theta plus cot theta, and divide this cot theta minus cosec theta plus 1. This is cot numerator denominator, and the answer is cosec theta plus cot theta. This is the product of yield heat hectare in quantiles of heat of 100 farms. So this is the distribution and draw its given farm of the data, or in this medium you have to find out, and that answer you have to find like this of equation is the main class and frequency, and then answer is x is equal to 9 and y is equal to 15. The bucket find out the compatibility fill in the bucket is 1 upon 3 is multiply pi is 22 into 7 into 30 semi height, and in bracket 500 plus 200 is 700. So V is equal to 22,000 semi cube is 22 liter. So you have to find out for 40 per liter. So 40 into 22 is 880 rupees. Then show the square of the any positive integer 5 cube plus 2 and 5 cube plus 9. Then the integer you have to find out like this, and prove that one of the every 3 consecutive positive integer is divisible by 3. This is 3q plus 1, 3q plus 2, 3q plus 3. And then you have to find out the d of this value. For consecutive number of AP is 32, and the first term last term is middle term 7 gem 15. So a square minus 9 d square upon a square minus d square, you have to find out 7 upon 15. This is find out s square is equal to 4 and d square is equal to 4 and d square is equal to plus or minus 2, and that is 2, 6, 10 or 14. And this is the second one. Solve this by equation of this Tn and
you have to last answer Tn is equal to 14 and x is equal to 14. And then you have to, from the top of this 7-meter high building at angle elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of the dispersion of its foot is 45 degree, determine the height of the tower. टावर का हाइट फाइंड करना है, तो उसका आंसर आएगा 7 + 7√3। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी ये वीडियो भेजिए। CBSE का दिल्ली का पेपर है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। देखते रहिए ऐसे वीडियो, नॉलेज बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच।